we had said that this movement is started by the activists. The activists put their demands, 3 demands. One of task force, that this type of criminals who are basically hardcore into political nexus, they take task force जावपाक जाय. Number 2, Rama Kandkonkar needs to be given protection in terms of a guard being with him even after he is discharged. Number 3, main munda hai to mastermind, whether this politician is involved, whether a cabinet minister is involved, there has to be no partiality. He has asked the SP has assured him that there will be no favoritism जावपा ना म्हणून. We have no तेंचेर पुलिसेचेर आमकां विश्वास ना. But all of us together, when it was decided, the next step, based on, we said within 2 days, जो mastermind ha, who mastermind's phone can be tracked, who was this video sent to, when Rama Kandkonkar was humiliated, who was this video sent to, तो phone कांड तडीपार केला. सो हे सगळे आमी मुखेलमंत्री सांगला की हे इसली स्ट्रॅटेजी चलपाना, गोंयकार ओगे रावपाना. When you all were in opposition, no one created such problems. So, एक democracy जावपाक जाय, healthy democracy, and you cannot stifle the voice of the opposition. And Rama Kandkonkar is known to criticize several people that are in power. It is his right to make sure whatever is wrong, whether you respect his voice or do not respect his voice. That are his views. But as per the Samvidhan, तेगेलो तो हक. आणि आज म्हाका दिसता जे आमी मुखाल पावल घेवपाक जाय. म्हाका दिसता हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे everyone, especially the activists. That is why we send the activists first. We said, speak for 2 minutes because I'm going. Yeah, speak. I just want to thank all the opposition leaders who stood by the activists today. And CMan assurance dila, whoever the mastermind is behind this, he will be bought. Tengelo phone crush kelolo ha hui. So they are supposed to send it for forensic. And magi the details be katle. Whoever at that point of time calls be kelle, tenka hui soglank appoint atole, and tenka sodpa diupa nai hui bail jaupachi tenchi na. And whoever are there behind this, जाऊ दे 100 जण appoint atले musangla. तो जाऊ आमदार ना जाऊ तो कोणूच. They will find out and they will expose. So I thank the entire crowd who stood by us today. Thank the opposition leaders. Thank all the NGOs. Within 24 hours, maglai demi. So within that time, it should happen. So I thank all the opposition leaders for standing by the activists. Eshekon, Goy Samaria, Goinkara Barbo Rauya. And I thank once again all the opposition leaders for coming and standing by the activists, the NGOs, the social workers. Once again, thank you everyone. Also thank you for standing by Rama. Also thanks to media. Thanks to the media. Thank all of them for the media for broadcasting this. Thanks for the media. So I'll just end it. Media nice dakoile and media nice proof kele ki ahai mun. Thank you tumka. So another thing that was like a task force jenna jata, especially it is a very serious thing. And एक national NSA act इंचेर घालपा जाय. This criminal basically jailin sutta. Eklo bailin daha, so his bail, there was a condition that he should not do another crime. So this bail should be cancelled permanently. Bagadista, there has to be a solution. And this case, charge sheet जावपाक जाय, हे सगळे आम्ही personally also we will monitor. We have all the opposition MLAs also. We will personally monitor this, and whatever next step or call given by the activist, I think all of us will be there in the interest of the state. ओके युरी आज आम्ही पहिले की थोडे तुमचे MLAs आहात त्यांच्या वांगडा मातशे मॅन हँडलिंग जाले सो त्यो गजाली कितें उलोवप जाले भितर ना थोडो मार आम हायल्या प्रॉब्लेम ना लोकांक हे प्रॉब्लेम रिजॉल्व जावपाक जाय मेन म्हणटा ते आमी डेफिनेटली देयर वॉज वन पर्टिक्युलर जेंटलमॅन हू ट्राय टू मॅन हँडल वेन्झी he was there at the forefront at the start and he was manhandled. We brought it to the notice of the SP, we brought it to the notice of the Chief Minister. I believe Amit Palekar also got some injuries, I also got a cut and whatever. See, thode cut zalmo problem na. It is our right to basically highlight issues, highlight जे पड लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आज गोंयांत जाला आणि गोंय बिहार
जावचे ना, UP जावचे ना म्हणून जे कायदे हाडपाक जाय, जावं NSA एक्ट, जावं टास्क फोर्स, हे सगळे म्हाका दिसता पुलीस नेक्सस, पॉलिटिकल नेक्सस नासता हे जायना. SPन सांगला अजून आपण इन्व्हेस्टिगेट करतलो. म्हाका दिसता विदिन दिस वॉट एवर डिमांड वी हॅव पुट, चीफ मिनिस्टर हॅज अश्योर्ड देम अँड वी विल टेक अ नेक्स्ट कॉल बेस्ड ऑन दॅट. एकटो तो एक्सपेंडिंग आहा पळय तेका टाइम लिमिट कितें दिलो? No, they have told us that 7 of them they have already arrested. They've got all 7 of them. That is what they have told us. They were not 6, they were 7. But main हांकां हे डिक्टेशन दिवपी कोण? हांव सदांच म्हणटा हांगेलो पाय कोण हे करपाक, भुरग्यां थिंग धाडपाक, ते पायक पळय हाडपा जायो. ते पाय काडना जाल्यार कांय जावपा ना. सो ते मेन जावपा जाय. आणि गोवा बंदाचो जो तुमचो So we will take the call based on the what happens in the next few days. आयज सगळे आमी एकटे जाल्ले गोंयकार म्हणून, आनी तो एक कारण म्हणजे रामा काणकोणकराचेर जो ब्रुटल अटॅक हो जालो. आनी तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना आझाद मैदानाचेर आमी जमले तेजे नंतर आमी DGPक मेळपाक गेले, SPक मेळपाक गेले. SP थंय आमकां मेळलो, DGP मेळोंक ना. तेजे नंतर आमी CMक मेळटले म्हणून सगळे भायर सरले. आनी तुमी पळयलां त्या टायमार कितें जालें तें आमकां मदींच आडयले. आनी आडयले नंतर आमचे जे आमदार आसा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, तेंचेर पासून हात घातलो, आमकां ओडोवपाचो प्रयत्न केलो. हें सगळें जालें आनी आफ्टर दॅट CMन हांगा आमकां येवपाक अपॉइंटमेंट दिली आनी आयज आतां आमी वचून CMक मेळले. आमी तांकां क्लियर कट सांगलेलें आसा, SPकूय सांगलां, CMकूय सांगलां की जे सद्याक चल्ला गोंयान UP बिहाराची सद्याक पद्दत जी चालू आसा, कशें मारता, कशें फोडटा, दिन दहाडे कशें अटॅक करता, होच मॅटर न्हू, अशें कितलेशे मॅटर जे आसा हे चालूच आसा. पण हेजेर थोड्यान एक्शन जायना. आनी ही एक्शन कित्याक जायना, तेकाच लागून आमकां हांगा येवचें पडलें, आमकां रस्त्यार येवचें पडलें. अशें समज नासलें जाल्यार आमकां कोणाकूच रस्त्यार येवचें पडचें नासलें. आयज सगळे गोंयकार हांगा कित्याक जमले की एक कारण आसा, की आयज गोंयकारांचे तकलेन अशें जालां की हांगा पुलीस बसून आमकां सपोर्ट करपाचें ना आनी पुलीस आमच्या फाटीं रावपाचें ना. आतां आमी SPक जेन्ना विचारलें की बाबा तो 24 वरां ऑलमोस्ट जाली त्या मॅटराक, आनी 24 वरां जावन बसून तो मास्टर मायंड कोण, कित्याक आतां ते म्हणटा तांकां अरेस्ट केले, पूण तेजे फाटल्यान मास्टर मायंड कोण? कित्याक हेजे पयलू हेच मनीस, हेच जे कोणाक अरेस्ट केल्ले आसा हेंकां पयलू अरेस्ट केल्ले, ते सुटले, बेल आउट जावन सुटले आनी परत तेच अरेस्ट करता. सो तेंचो मास्टर मायंड कोण तांकां चलयता तो आजून पर्यंत अरेस्ट जावना. तांकां जेन्ना सांगलें की तो मोबायल फोन इतली कापासता जाता की मोबायल फोन घेवन रिकॉर्ड करता आनी रिकॉर्ड करून ते व्हिडिओ त्या मास्टर मायंडाक धाडटा. सो हे जो आजून पासून ट्रॅक जावना. आतां इतली आमची टॅक्नॉलॉजी इतली वाडलेली आसा आनी 24 वरां जाली, कॉल लॉग लिस्ट आउट जायना. मोबायल फोन फोडलो म्हणटा, समज मोबायल फोन फोडलो जाल्यार तेजी कॉल लॉग लिस्ट ती सिम कार्डाचेर आसता, जो ऑपरेटर आसा, सर्व्हिस प्रोवायडर आसता, ते सर्व्हिस प्रोवायडरा कडल्यान ती कॉल लॉग लिस्ट काडपाक जाल्ली आनी तेंचेर हें करपाक जाल्ली. तेज्या बाबतींत तेंच्यान कांयच सांगना. SPन सांगलां की 24 वरांचो आपणाक टायम दी, 24 वरां भितर कितें आसा तें आमी सांगतले आनी तेज्या बाबतींत आमी एक्शन घेतले. चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला विथीन 2 days कोण कोण हेजे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, कोण कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तांकां आमी एक्शन घेतले. कारण आमकां सगळ्यांक आयज सगळे गोंयकारांक खबर आसा हांगा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा आनी त्या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंटाक लागून भियात घालपाची ही क्षमता जी जाल्या, म्हटल्यार असो सपोर्ट केल्लो आसा की तुमी कितेंय करा आमी सोडपाचें ना. कोण उलयता तेंचेर आमी अटॅक करतले, कोण आवाज काडटा तांकां आमी सोडपाचें ना. सो ही भिरात घालपाची जी हें केल्ली आसा, हें वातावरण केल्लें आसा, हें आमी तरी खपोवन घेवपाचें ना. आनी हें आमी डिमांड केल्लो आसा की बेगांच्या बेगान, जशें युरीनूय सांगलेलें आसा की टास्क फोर्स डिप्लॉय करपाक जाय, जे पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. कित्याक काल हांव जेन्ना गेल्लो तेन्ना रामाच्या फुड्यान एकूय पुलीस नासलो, जो भायरूय पुलीस नासलो. ISP म्हणटा आमी थंय दवरिल्ले, ते थंय हितून आसले, तेंचे जो आउटपोस्ट आसा ते आउटपोस्टान आसले. प्रेस भाऊय आमचे थंय आसले त्या टायमार, ते क्लियर कट सांगला. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पुलिसांनी घेवपाक जाय, मुखेलमंत्र्यांनी घेवपाक जाय. कारण आमकां गोंय जें आसा ते UP बिहार अशें करपाचें ना. आमकां गोंय हें गोंय दवरपाक जाय, एक पीस लविंग स्टेट दवरपाक जाय. आयज अशें गोंयकार भायर सरले आनी गोंयकार एक कारण जो आसा तो कारण घेवन फुडें वयतले. सो मागता गोंयकारां कडेन कित्याक एक असो जो उलो मारलेलो तो कित्याक लागून मारलेलो, कित्याक हें पीस लविंग स्टेट आसा ही प्रोटेक्ट करपाक आनी फुडें व्हरपाक लागून. थँक्यू. ह्या प्रोटेस्टाचो जो इमिजिएट आउटकम येयल्लो आहा तो म्हटल्यार CM आतां रामा काणकोणकाराक मेळपाक GMCन गेल्लो आहा. तो एक इमिजिएट रिजल्ट आमकां मेळ्ळो आहा. बाकीचे जे आमी डिमांड्स घातला ताका टायम लागतलो. सो हो आयचो स्टेटस SP विचारले, SP म्हणपाक लागलो आपूण आयज हांगासर बिजी आहा, सो आपल्याक इन्व्हेस्टिगेट करपाक टायम मेळोंक ना. सो तेणी टायम मागून घेतला. एज एंड वेन आफ्टर एवरी 24 hours केसीचेर कितें अपडेट जाता तो मिडिया थ्रू आमकां पावोवचो म्हणून एक डिमांड घातलेलो आहा. सो आमकां एक्सपेक्टेडली होपफुली प्रत्येक दिसा अपडेट मेळटलो ह्या केसी बद्दल. सो दिस इज अबाउट द केस. सेकंडली सगळे गोंयकार
स्पेशली लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 7 आमदार ऑपोजिशनाचे हांगासर पावले म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. इरिस्पेक्टिव्ह पार्टी, खंयच्या पार्टीचे, इवन थोडे बीजेपीचे आमकां मेळ्ळे आता, सगळे जाण येयले, देव बरें करूं. आनी अशेंच एकवट रावचे पडटले, पार्टी एफिलिएशन पळयनासतना. कित्याक पयले आमी गोंयकार, गोंय राखपाचो आमचो पयलो उद्देश. तशेंच ह्या प्रोटेस्टाक लागून खुबश्या जाणांक आयज त्रास जाले. स्कूल सुटच्या टायमार मेन हायवेचेर प्रोटेस्ट जालो, तांकां सगळ्यांक आमी सॉरी म्हणटा. मातशे त्रास काडचे, कित्याक हे जे आमी करता ते फुडाराक तुमच्या भुरग्यां वांगडा अशें जावपाक जायना म्हणून प्रिकॉशनरी मेजर्स हे समजोवन घेवचे. देव बरें करूं. आज जेन्ना आतां जो अटैक इससे पहले भी 2-3 बार गोवा में हुआ है, तो इस हिसाब से ये प्रोटेस्ट आज कॉल आउट किया था. और आज़ाद मैदान के ऊपर हम सब लोग जो विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन सब लोग उधर आए थे. एक ही कारण था कि गोयकार मतलब गोवन कौन है और गोवन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि आज ऐसा दिन दहाड़े अटैक इससे पहले नहीं हो रहा था और ये हो रहा है. उसके बाद जब भी हम डीजीपी को मिलने गए, डीजीपी हमें नहीं मिला, एसपी हमें मिला. एसपी ने हमें ब्रीफ किया कि क्या एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, लेकिन तब तक बाकी के जो कल्प्रिट थे उनको पकड़ा नहीं गया था. टोटल 7 थे. और जो मास्टरमाइंड है, हमारा तो क्लियर कट डिमांड है कि जो मास्टरमाइंड ये चला रहा है, क्योंकि इन दिनों आपने देखा रहेगा बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं और ये एक मास्टरमाइंड है जो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है. ये माफिया राज जो गोवा में चल रहा है वो एंड करने के लिए हमने डिमांड किया है कि टास्क फोर्स बिठाना चाहिए. सो वो जो है डिमांड हमने डिमांड किया था सीएम को मिलने का, लेकिन हमें पुलिस ने स्टॉप किया. पुलिस ने स्टॉप करने के बाद उधर ऐसा माहौल बनाया कि आप आगे भी नहीं जा सकते. लेकिन हम पीसफुल्ली आगे बढ़ रहे थे, पीसफुल्ली मिलने को चाह रहे थे. जो बाद में सीएम ने बुलाया और उसके बाद हम इधर आए. लेकिन सीएम को भी हमने क्लियर कट बोला है कि जो असॉल्ट हुआ है उसका जो भी मास्टरमाइंड है, जो भी कल्प्रिट्स है, उनके ऊपर पूरी तरह का एक्शन लेना चाहिए. जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी रहे, वो मिनिस्टर रहे, वो एमएलए रहे या और कोई रहे, उनके ऊपर भी एक्शन रहना चाहिए. क्योंकि ये एक गोवा में पहले नहीं हो रहा था, अभी आज कल के दिन पे हुआ है और इसका हम पूरी तरह से निश्चित करते हैं. तो आपको लग रहा है इसमें पॉलिटिकल बैकअप है? इसमें डेफिनेटली इसमें पॉलिटिकल बैकअप है. पॉलिटिकल बैकअप के बिना ये नहीं हो सकता है. और यही चीज़ भी हमने चीफ मिनिस्टर को बोली है. चीफ मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है कि कोई भी रहे इसके पीछे उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे. लेकिन अभी तक जो टाइम उन्होंने दिया है, मतलब 24 घंटे के अंदर जो है उनके ऊपर एक्शन लेंगे और 2 दिन के अंदर जो मास्टरमाइंड है उसको भी ऊपर एक्शन लेंगे. सो हमें देखना है कि क्या होगा इसके आगे. उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि और क्या प्रोटेस्ट हो और कुछ करना है. तो अगर मास्टरमाइंड अरेस्ट नहीं होता है तो जो 104 उन्होंने कहा है कि गोवा बंद का ऐलान किया है, तो आप उनके साथ रहोगे? तो हम डेफिनेटली उनके साथ रहेंगे, क्योंकि जो एक्टिविस्ट है या और जो गोवा के बाकी के एनजीओज हैं उन्होंने कॉल आउट किया, तो हम डेफिनेटली उनके साथ रहेंगे और उनका पूरी तरीके से साथ देंगे.